नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जो हमारी डॉक्टर रंजीत सिंह टीजीटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर चल रही थी, उसी में मैं आज लेकर आई हूँ प्रैक्टिस पेपर नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच वीडियो टिल एंड। ओके, सो गाइज, दिस इज प्रैक्टिस पेपर नंबर 16. Okay, practice paper number 16. So guys, very first question is how many essays are there in the third edition of Bacon's essay? So Bacon का essay का जो थर्ड एडिशन था उसमें कितने essays थे? So 10, 35, 46 या 58. So answer will be right here. It is D guys, 58 essays थी उसमें. Okay, थर्ड एडिशन में. Next one is the authorized version of the Bible is also known as. सो किंग एडवर्ड बाइबल, किंग जेम्स बाइबल, किंग हेनरी एट्थ बाइबल या किंग हेनरी बाइबल. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइज ऑब्वियसली बी, किंग जेम्स बाइबल, क्योंकि आपको पता होगा किंग जेम्स ने भी बाइबल को ट्रांसलेट कराया था. नेक्स्ट वन इज which is authorized version of the Bible. So English translation of the Christian Bible, later translation of the Christian Bible, Roman translation of the Christian Bible, Greek translation of the Christian Bible. So answer will be right here. It is A, English translation of the Christian Bible. It is authorized version. Okay. So next one is in which year the translation of the Bible in English started. So 1601, 1602, 1603 or 1604. So answer will be right here. It is D, 1604. Next one is guys, fifth question. In which year the translation of Bible in English completed? So 1610, 1611, 1612 या 1630. So answer will be right here. It is B, 1611. 1611 में ये बाइबल का जो वो था ट्रांसलेशन वो कंप्लीट हो चुका था. नेक्स्ट वन इज गाइस, हु स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश. इंग्लिश में किसने स्टार्ट कराया था क्रिश्चियन बाइबल का ट्रांसलेशन? सो किंग जेम्स, किंग हेनरी, किंग एडवर्ड या किंग एडवर्ड सेकंड. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, किंग जेम्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हु फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल. इंग्लिश बाइबल को फर्स्टली किसने प्रिंट कराया था? सो जॉन नॉर्टन, रॉबर्ट बार्कर या थॉमस नास या बोथ ए एंड बी. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, बोथ ए एंड बी. ओके, जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, प्रिंट कराया था फर्स्टली इसको. नेक्स्ट वन इज हु वॉज रॉबर्ट वाकर. रॉबर्ट वाकर कौन थे? और ड्रामाटिस्ट, मिनिस्टर, किंग्स प्रिंटर या किंग्स कोर्टियर. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइस सी, किंग्स प्रिंटर. ओके. सो नेक्स्ट वन इज हु अप्रूव्ड द बाइबल इन इंग्लिश. इंग्लिश में अप्रूव किसने किया था बाइबल को? सो पोप, किंग जेम्स, इंग्लिश चर्च या क्वीन एलिजाबेथ. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, इंग्लिश चर्च. इंग्लिश चर्च ने ही अप्रूव किया था किसको, बाइबल को इन इंग्लिश में. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर in the committee that translated Christian Bible in English. So 45 scholars, 46, 47 या 48 scholars. So answer will be right here. It is C, 47 scholars. Next one is guys, the original Bible is composed in English in language Greek, Roman, English या Hebrew. So answer will be right here. It is D, Hebrew. Hebrew language में original Bible जो था वो compose किया गया था. Next one is happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Who shared this? So Leo Tolstoy, John Milton, Walt Whitman या Hemingway. So answer will be right here. It is guys A, Leo Tolstoy. Leo Tolstoy जो थे उनके ये वाक्य थे. Next one is all animals are equal but some animals are more equal than others. So who shared this? मतलब इनका कहना ये है कि सभी एनिमल समान है वैसे तो, लेकिन कुछ एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा समान होते हैं. सो ल्यूइस कैरोल, जॉन मिल्टन, वॉल्ट विटमैन या जॉर्ज ऑरवेल. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, जॉर्ज ऑरवेल. नेक्स्ट वन इज ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. हु शेयर दिस? सो लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, टेनिसन या बर्नार्ड शॉ. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन का ऐसा कहना है. नेक्स्ट वन इज I have a smack of Hamlet myself. If I may say,
शो हु शेड दिस, सो कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या पीबी सैली. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए कॉलरेज. नेक्स्ट वन इज इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर भगवान नहीं है, इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, तो हमें क्या करना चाहिए, आवश्यक रूप से उन्हें खोजना चाहिए. हु शेड दिस, सो वोल्टेयर, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या थॉमस हार्डी. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस ए वोल्टेयर. वोल्टेयर का ऐसा कहना था. नेक्स्ट वन इज एन allegory is a series of metaphors of symbols continued throughout an entire story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to in its main features. So Nesfield PGT3 में आया हुआ है. Following this, which of the books mentioned below in is an allegory? So Pilgrim's Progress, the crucifixion of Christ, Gulliver's Travels या Robinson's Crusoe. So answer will be right here. It is guys A, Pilgrim's Progress. Okay, Pilgrim's Progress क्या थी, एक allegory थी. नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको. आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, मैंने आपको एक लाइट ब्लू कार से उतरते हुए कल देखा था, कल देखूंगा. ठीक है, अब ये इसमें कौन सी वो है फिगर ऑफ स्पीच. सो लिलॉर्ड्स पुन, पैथेटिक फैल्सी या इनवेंडो. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस डी, इनवेंडो. ओके, नेक्स्ट वन इज note the following MCQs 19 to 44 are from Shakespearean tragedy Hamlet. So Hamlet से सारे हैं, या आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी और सबसे बिगेस्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का हेमलेट. सो वाई आर द ग्रेव डिगर्स आर्ग्यूइंग अबाउट ओफेलिया, ओफेलिया के बारे में ग्रेव डिगर्स आर्ग्यू क्यों करते हैं. बिकॉज दे रिमेंबर हर बीइंग ब्यूटीफुल, बिकॉज दे हियर that she has killed herself, because they feel pity of Laertes, because they do not believe that Ophelia has died. So answer will be right here, it is guys B, because they hear that she has killed herself, उन्होंने ऐसा सुना था इसलिए. Next one is what does the grave digger say to Hamlet when he asks whose grave he is digging. So he says that it's Ophelia's grave, he says that it's Polonia's grave, he says that it's Hamlet's grave, yeah, he says that it's his own grave. So answer will be right here, it is guys D, he says that it's his own grave. ये कहते हैं कि ये थोड़ा कॉमिक सीन भी रहा है इसमें, वो कहते हैं कि हम खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं. नेक्स्ट वन इज what does Hamlet notice about the funeral procession. So that the procession seems irregular and suggests a suicide, that those who are mourning seem excessively upset, that Laertes has returned to take part in the funeral, that the funeral does not seem particularly sad. So answer will be right here, it is guys A, that the procession seems irregular and suggests a suicide. Next one is what does Hamlet say to Laertes upon realizing that it is Ophelia's funeral? That Laertes is a terrible brother, that he loved Ophelia in ways that no one could understand, that he was to take his own life now that Ophelia is dead, that he feels Ophelia's death is a punishment for his own bad deeds. So answer will be right here, it is guys B, दैट ही लव्ड ओफेलिया. वो कहता है कि मैं ओफेलिया से इतना प्यार करता था कि कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता है. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट फाइनली अपीयर्स लियर्टिस एट ओफेलियाज फ्यूनरल. लियर्टिस क्या दिखता है, मतलब किस तरीके का वो होता है. हेमलेट एक्सप्रेसेस हिज ट्रू फीलिंग्स फॉर ओफेलिया. जेट्रूड एंड क्लाउडियस से दैट हेमलेट इज insane. Claudius reminds Laertes that they have a plan to kill Hamlet. Hamlet makes a fool of himself. So answer will be right here, it is guys C. Claudius reminds उसे याद दिलाता है कि हमें क्या करना है, हेमलेट से बदला लेना और उसको मार देना. नेक्स्ट वन इज what does Hamlet tell Horatio about death. So क्या बताता है, that it is inevitable, that it should be fought at all costs, that he fears it, that thinking about it comforts him. So answer will be right here, it is guys A, that it is
इनएविटेबल. ओके. सो नेक्स्ट वन इज हाउ डज जेट्रूड डाइड. जेट्रूड कैसे मर जाती है, जेट्रूड की डेथ कैसे होती है. सो हेमलेट फोर्सेस हर टू ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजनड वाइन. She accidentally drinks wine that Claudius poisoned. She kills herself with a sword. Horatio kills her with a fencing foil. So answer will be right here. It is B. She accidentally drinks wine that Claudius poisoned. जो Claudius ने poison डाल के जो वाइन रखी थी, ड्रिंक रखा था, उसको वो पी लेती है. वो किसके लिए रखा था, हेमलेट के लिए. नेक्स्ट वन इज हाउ डज हेमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लाउडियस प्लान. क्लाउडियस का प्लान हेमलेट को कैसे पता पड़ता है. सो ही ओवर हियर्स क्लाउडिया डिस्कसिंग इट. जेट्रू टेल्स हिम what she knows. Laertes makes a dying declaration. Horatio finds the position. So answer will be right here. It is C. Laertes makes a dying declaration. Next one is what does the dying Hamlet tell Horatio to. सो होरेसियो को क्या बताने के लिए कहता है मरा हुआ. एवेंज हिज डेथ, बिकम किंग, मॉर्न ऑफ फॉर हिम, लिव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी गाइस. कहता है कि आप तुम जीवित रहो और मेरी कहानी लोगों को बताना. नेक्स्ट वन इज हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले. सो रोजनक्रांस, होरेसियो, गिल्डस्टोन या फोर्टिनब्रास. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, फोर्टिनब्रास. फोर्टिनब्रास उसमें लास्ट में वो करता है. Next one is what words best describes Hamlet's character throughout the play. So mysterious, thoughtful, morose, brave, sociable, fun, easygoing, smooth, charismatic, या sensual, caring, effeminate. So answer will be right here. It is guys A. Mysterious, thoughtful और morose रहा है इसका. Next one is what is Claudius' most powerful weapon. His money, his sex appeal, his way with words, his aggressiveness. So answer will be right here. It is C. His way with words. Next one is why is Hamlet sometimes considered to be a play about an action. So because Hamlet never hesitates when it comes to acting against Claudius, because Hamlet spent the play trying to figure out if the ghost is real, because Hamlet needs to know Claudius is guilty before acting. Claudius, Gertrude and Ophelia are passing and inactive heroines. So answer will be right here. It is C, because Hamlet needs to know Claudius is guilty before acting. नेक्स्ट वन इज हाउ डज क्लाउडियस रेस्पॉन्ड टू हेमलेट. हेमलेट से कैसे रेस्पॉन्ड करता है क्लाउडियस इंसैनिटी. सो वाई टर्निंग गो जेट्रूड फॉर कंफर्ट, वाई फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलबींग, वाई थ्रोइंग लेविस पार्टीज, वाई टर्निंग टू रिलीजन. So answer will be right here. It is B guys, by focusing on himself and his own well-being. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज जेट्रूड नेवर एबल टू डू. जेट्रूड कभी भी नहीं कर सकती थी क्या. एक्सप्रेस हर लव, बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हर सर्कमस्टांसेस, बी पावरफुल, बी सेक्सुअल. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी गाइस, बी रिफ्लेक्सिव अबाउट हर सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सीन एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क. सो इंडेंसिवनेस, लैक ऑफ मिलिट्री पावर, international relations या moral corruption. So answer will be right here. It is D guys, moral corruption. Next one is which of these relationship would not be construed is incestuous. So Laertes and Ophelia, Hamlet and Ophelia, Hamlet and Gertrude या Gertrude and Claudius. So answer will be right here. It is B guys, Hamlet and Ophelia. Next one is how do characters use language in Hamlet. हेमलेट में कैरेक्टर जो थे वो कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी गाइस, एज अ मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल. नेक्स्ट वन इज हाउ आर women जनरली viewed in Hamlet. So they are viewed as manipulative and untrustworthy. They are viewed as heroines and naturals. They are viewed purely as sexual objects. They are viewed as inspirational muses. So answer will be right here. It is guys A. They are viewed as manipulative and untrustworthy.
Next one is, why is Hamlet considered unique among revenge plays? So, because it is about betrayal, because it takes place in Denmark, because action is repeatedly put off, because it is tragedy. So answer will be right here. It is guys C, because action is repeatedly put off. Next one is, who describes Polonius as a sincere father but also a busybody, who is accordingly officious, garrulous, and impertinent. So William Hazlitt, William Wordsworth, Ben Jonson, या John Dryden. So answer will be right here. It is A, William Hazlitt. Next one is guys 40. In Act 2, who refers to Polonius as a tedious old fool and taunts him as a latter-day Jephthah. So Hamlet, Claudius, Gertrude, या Ophelia. So answer will be right here. It is A, Hamlet. Next one is, which character in the play Hamlet has been referred as a foolish prating knave? So Hamlet, Claudius, Gertrude, या Polonius. So answer will be right here. It is obviously Polonius. Next one is, which character is characterized as a typical Renaissance newman? So Hamlet, Polonius, Claudius, या Gertrude. So answer will be right here. It is B, Polonius. Next one is, who speaks the following popular lines in Hamlet? Hamlet में ये popular lines को कौन बोलता है? So neither a borrower nor a lender be too thin own self be true. Brevity is the soul of wit. Though this be madness, yet there is method, and clothes make the man. Old friends are the best friends. Oh, I am slain. So Hamlet, Polonius, Claudius, या Gertrude. So answer will be right here. It is B, Polonius. So next one is guys 44. Vishal Bharadwaj directed movie Heather 2014 is a modern day adaptation of William Shakespeare's tragedy. So Hamlet पे, ओके हेमलेट पे ही इन्होंने ये मूवी बनाई है हैदर. नेक्स्ट वन इज, which play was omitted from the first folio edition in 1623? So कौन सा नहीं था? Henriette, Pericles, Hamlet या Henry VI? So answer will be right here. It is guys B, Pericles. Next one is, who says the following lines? And my poor fool is hanged, no, no, no life. Why should a dog, a horse, a rat, have life, and thou no breath at all? So Cordelia in King Lear, Hamlet in Hamlet, King Lear in King Lear, Miranda in The Tempest. So answer will be right here. It is C, King Lear in King Lear. So next one is guys, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Who shared this in praise of Shakespeare? So Charles Lamb, S.T. Coleridge, John Dryden, या Dr. Johnson. So answer will be right here. It is C guys, John Dryden. Next one is, who speaks these lines? कौन बोलता है इन lines को? Peace, peace, dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep? So Lady Macbeth in Macbeth, Miranda in The Tempest, Cleopatra in Antony, and Cleopatra, Portia in The Merchant of Venice. So answer will be right here. It is C, Cleopatra in the Antony and Cleopatra. Next one is, who wrote in his notebook? Shakespeare, Drayton, and Ben Jonson had a merry meeting, and it seems drank too hard, for Shakespeare died of a fever there contracted. So Richard Sesson of London, Ben Jonson, John Ward, the Vicar of Stratford, Henry Condell. So answer will be right here. It is guys C, John Ward, the Vicar of Stratford. Next one is, who praised as the poet of humanity? So किसको ह्यूमैनिटी का पोइट माना गया है? So John Cable, Corliss Southey, या Jonna Valley. So answer will be right here. It is guys A, John Cable. Next one is, Wordsworth was the only poet laureate to write no religious verses, official verses, moral verses या offending verses. So answer will be right here. It is B, official verses. कोई भी उन्होंने ऑफिशियल वर्क उस समय नहीं लिखा था when he was poet laureate. Who called Wordsworth as a egotistical sublime? So सभी जानते हैं, जॉन कीट्स. Next one is,
Oswald, Marmaduke, Lord Herbert, Lazy Wallace, Idonia, and Lord Clifford are the characters in Wordsworth. The Borders, the Prelude, the Recluse, Tinton Abbey. So answer will be right here. It is guys A, the Borders. The Borders में ये सभी characters आप appear होते हैं. Next one is in the essay the preface to the lyrical ballads, William Wordsworth manifested the guideline. So गाइस देखिएगा, इसका आंसर एक्चुअली क्या है कि ई है, ऑल ऑफ दीज है. सो अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे. ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री, बिल्कुल सही बात है. एवरी लैंग्वेज इज द बेस्ट सूटेड फॉर पोएट्री. एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट्स, बिल्कुल सही बात है. जब एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ही नहीं होंगे तो फिर प्लॉट क्या काम का. नेक्स्ट है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ emotion that take its origin from emotion recollected in tranquility. So William Wordsworth, all of these. Okay, next one is in which work of Wordsworth does the line still sad music of humanity occur. So TCT 16 में भी आया. Tintin Abbey, the Recluse, Immortality Ode या the Prelude. So answer will be right here. It is guys A, Tintin Abbey. Okay, so next one is who wrote in the Beautiful and the Sublime. No person seems better to have understood the secret of heightening or of setting terrible things, if I may use the expression in their strongest light, by the force of a judicious obscurity than Milton. So Edmund Burke, Dr. Johnson, William Blake या Dryden. So answer will be right here. It is A, Edmund Burke. Next one is guys 57. Sorry. Miltonic verse cannot be written but in an artful or rather artistic humor, and that Paradise Lost was a beautiful and grand curiosity. Who exclaimed it? So John Keats, John Bunyan, Henry Vaughan या Richard Crusoe. So answer will be right here. It is A, John Keats. Next one is guys who claimed saying the study of Milton could be of no help. It was only a hindrance. So Edmund Burke, Dr. Johnson, William Blake या T.S. Eliot. So answer will be right here. It is D, T.S. Eliot. So next one is guys who wrote in the anxiety of influence that Milton is the central problem in any theory and history of poetic influence in English. So Harold Bloom, Mary Shelley, John Keats या Dryden. So answer will be right here. It is A, Harold Bloom. So next one is guys the quotation. A good book is the precious life blood of a master spirit embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life, is taken from Milton's Paradise Lost, Areopagitica, Comus या Paradise Regained. So answer will be right here. It is guys B, Areopagitica. Okay. So guys next one is who spoke of Milton as our greatest public poet. So T.S. Eliot, F.R. Lewis, Philip Pullman या I.A. Richards. So answer will be right here. It is C guys, Philip Pullman. Next one is justice shows the problems of British society, English legal system, Scottish society, American legal system. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, इंग्लिश लीगल सिस्टम. जो जस्टिस प्ले है किसका, गॉल्सवर्दी का, उसमें क्या दिखाया जाता है, इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को शो किया जाता है. नेक्स्ट वन इज गॉल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ. टीजीटी 13 में आ रहा है ये क्वेश्चन पहले भी. सो लेबर डिस्प्यूट्स, जस्टिस या वॉर्स या क्लास डिस्टिंक्शन. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइस लेबर डिस्प्यूट, ए. Okay, so next one is Galsworthy's famous play The Silver Box deals with. Silver Box में क्या है, the inequality of power, the inequality of justice, the inequality of labor या the inequality of money division.
So answer will be right here. It is B, the inequality of justice. न्याय की असमानता दिखाई जाती है. Next one is an indirect word or expression that you use instead of a more direct one when you are talking about something that is unpleasant or embarrassing. The use of such expressions is called. So offensiveness, soothing word, sugar coating या euphemism. ठीक है. So answer will be right here. It is guys D, that is euphemism. मतलब डायरेक्टली आप कोई वर्ड ना कह सकें, जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो ये ना कह के कि कोई मर गया तो आप कहें कि ही पास्ड अवे, तो ये भी यूफेमिज्म कहलाता है. नेक्स्ट वन इज एन एग्रीएबल प्लीजिंग एंड हारमोनियस साउंड इज कॉल्ड. सो कैकोफोनी, होमोफोनी, पॉलीफोनी या यूफोनी. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज यूफोनी. यू का मतलब होता है गुड, सो यू लगा हो वहां पे गुड. Next one is a critical explanation or interpretation of a or a text, especially of scripture, Bible. So exegesis, metamorphosis, analysis या surrogacy. So answer will be right here. It is guys A, exegesis. Next one is a funny play for the theater full of ridiculous situations. So interlude, mask, mystery plays या farce. So answer will be right here. It is D, farce. Okay, उसे farce कहते हैं जो एक तरीके से कॉमेडी फिल्म प्ले टाइप का होता है. So a short piece of writing at the beginning of a book, sometimes praised by a famous person or someone who is not the writer. So forward, preface, epilogue या prologue. So answer will be right here. It is guys A, forward. Next one is a literary device that can be defined as poetry that is free from limitations of regular meter or rhythm and does not rhyme with fixed form. So blank verse, free verse, treasure rhyme या empty verses. So answer will be right here. It is guys B, free verse. Next one is free verse is also known as, so verse library. Verse library भी कहा जाता है. Next one is a particular type or style of literature, art, film or music that you can recognize because of its special characteristics. So gender, genre, genesis या variety. So answer will be right here. It is B, genre. Next one is guys a character fault or mistake that causes someone to fail or to be destroyed. So hemorrhagia, tragic straw, error या blunder. So answer will be right here. It is A, hemorrhagia. Next one is the belief that pleasure is the most important thing in life. So hedonism, antagonism, utilitarianism या puritanism. So answer will be right here. It is guys A, hedonism. Next one is the following MCQ 75 to 94 are from the Tempest. Tempest पहले चुरा है विलियम शेक्सपियर का उससे. So what title does Stefano assume in this scene? So King of Naples, Lord of the Tempest, Lord of the Iceland या King of the Iceland. So Stefano कौन होता है? So answer will be right here. It is C, Lord of the Iceland. Next one is what does the invisible Ariel do to cause trouble between Stefano and Trinculo? So ventriloquizes Trinculo, pinches Stefano या ventriloquizes Stefano या pinches Trinculo. So answer will be right here. It is A, ventriloquiz Trinculo. Trinculo को ventriloquiz करते हैं. Next one is what does Caliban say that himself, Stefano and Trinculo must do to take power from Prospero? So fight him physically, steals his books, abduct Miranda या use magic. So answer will be right here. It is guys B, steal his books. वो कहता है कैलिवन तो उसकी बुक्स को आप चुरा लो. Next one is what does Ariel do to lead the main astray and interrupt their plans? So brings Prospero to them, becomes visible, beats them या play music. So answer will be right here. It is guys D, play music. Next one is why does Stefano relish the idea of becoming ruler of the Iceland kingdom?
It is beautiful. The music is free. He likes Iceland. He will be rich. So answer will be right here. It is guys B. The music is free. So next one is, as the men are about to eat the banquet set before them, Ariel appears in what form? So a giant bird, yeah, disguised as Prospero, disguised as Ferdinand, a harpy. So answer will be right here. It is D, a harpy. Next one is, Ariel tells the men that their shipwreck and the loss of Ferdinand are punishment for what? So endangering Prospero and Miranda, colonizing the island, their classicism, the sin of pride. So answer will be right here. It is A, endangering Prospero and Miranda. So next one is, when Ariel makes the banquet disappear, what do the men do? So laugh, draw their swords, run away, या quietly watch him. So answer will be right here. It is B, draw their swords. Next one is, why can't the men attack Ariel with their swords? The swords become heavy. Ariel is flying. It seems rude. Their swords disappear. So answer will be right here. It is guys A, the swords become heavy. जो swords थी वो बहुत heavy हो जाती हैं, इसलिए उठती नहीं उन पे. Next one is, what does Alonso do when reminded of the likely death of his son? जब अलेंजो को पता चलता है कि उसके सन की डेथ हो गई तो वो क्या करता है? Tries to drown himself, attacks Prospero, gives a soliloquy, या shrugs his soldiers. So answer will be right here. It is A, tries to drown himself. अपने आप को भी डुबाने की कोशिश वो करता है अलेंजो. Next one is, when the spirits perform the mask for Ferdinand and Miranda, they transform into which three mythological figures? So Persephone, Venus and Cupid, Pluto, Persephone and Venus, Iris, Ceres and Juno, या Ceres, Persephone and Pluto. So answer will be right here. It is C, Iris, Ceres and Juno. Next one is, why does Prospero suddenly end the mask? आज वो क्या नाम है, प्रेस्पेरो जो होता है वो मास्क को सडनली एकदम अचानक से क्यों रोक देता है? इट वॉज बोरिंग, द वाइन रन्स आउट, फर्डिनेंड हैज अपसेट हिम, ही रिमेम्बर्स कैलिवन्स प्लॉट. जो कैलिवन ने मिरांडा के साथ किया था वो उसको याद आ जाता है, इसलिए उसे तुरंत वहीं रोक देता है. नेक्स्ट वन इज, वेयर डज एरियल लेट ट्रिंकलो, स्टीफेनो एंड कैलिवन टू डिले देयर अटैक? सो into the sea, into a swamp, straight or to Prospero towards moral alcohol. So answer will be right here. It is guys B, into a swamp. Next one is, what do Prospero and Ariel use to distract Trinculo and Stefano from their scheme to murder Prospero? मर्डर Prospero को मारने के लिए जो सोचते हैं तो एरियल कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है? Bottles of alcohol, Prospero's magic book, masks, या फाइन क्लॉथिंग. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, फाइन क्लॉथिंग. नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन ट्रिंकलो एंड स्टीफेनो टच द क्लॉथिंग? दे आर चेस्ड, नथिंग, दे आर स्किन वंस, दे फील गिल्टी. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, दे आर चेस्ड. नेक्स्ट वन इज, आफ्टर Prospero tells Ariel to release the man, he gives a soliloquy in which he gives up what? Magic, scheming, wine, या public oration. So answer will be right here. It is a magic. Next one is, what does Prospero promise to give Ariel at the last? मतलब एरियल को क्या देने का प्रॉमिस कर देता है? ओनरशिप ऑफ द आइसलैंड, हिज डॉटर्स फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, हिज फ्रीडम, फाइन क्लॉथ्स. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइस सी, हिज फ्रीडम. उसे फ्री करने का बोल देता है कि मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा लास्ट में. Next one is, in this final scene, what does Prospero do to his enemies? Kills them, enslaves them, curses them, या forgives them. So answer will be right here. It is guys D, forgives them. उन्हें माफ कर देता है सब. Next one is, what effect does the sight of more humans have on Miranda? She is disgusted, she is impressed, she does not care, she laughs. So answer will be right here. It is B guys, she is impressed. Next one is, why does Prospero ask the audience to applaud
him at the end of the play. So to congratulate him, to release him, to give him power, to unsettle the audience. So answer will be right here. It is guys B, to release him. Next one is, which of the following is a correct statement about partitive adjectives? Sorry. They are adjectives that expresses the proportion or fraction of a whole indicated by a noun. They are part of the indefinite numeral adjective. They also include multiples adjective which also indicate a fraction of a whole but greater than one, which can come before or after the noun. So all of the above. So answer will be right here, obviously all of the above. Next one is guys, directions 96 to 100. Use a suitable collective noun in the following sentences. So a caravan of pilgrims या merchants या both A and B या none of these above. So answer will be right here is C, both. A caravan of pilgrims या merchants. A dash of judges, bench, seat, court या none of these. So answer will be right here, it is a bench of judges. Next one is a circle of friends, acquaintances, army या both A and B. So answer will be right here, it is D, both A and B, friends or acquaintances. Next, a company of actors, merchants, actors, both A and B. So answer will be right here, it is D guys, both A and B. Next, a conference of preachers या delegates, both A and B and none of the above. So answer will be right here, it is C, both A and B. Next one is, which is the verb form in the underlined part of the sentence. So she is going to attend a wedding. wedding attend करने के लिए जाती है वो. अटेंड क्या है? टू अटेंड. तो आप सभी जानते हो टू अटेंड क्या होगा? अटेंड करना. सो इन्फिनेटिव. नेक्स्ट वन इज, सिलेक्ट द करेक्ट जीरंड फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंसेस. टीसीटी 4 में आ रखा है ये. सो व्हेन पेंटिंग स्टॉप द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप. हैविंग पेंटिंग स्टॉप द आर्टिस्ट लुकिंग अप. The paint stopped, the artist looked up. The painting had stopped, the artist looked up. So answer will be right here, it is A. When painting stopped, the artist had looked up. जब पेंटिंग स्टॉप हो जाती तब आर्टिस्ट दिखता है. नेक्स्ट वन इज, अ गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन. टू, एट, ऑन या फॉर. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज फॉर द कंक्लूजन. द बुक कंसिस्ट dash 10 chapters. So in, of, with. So answer will be right here, it is B, of. TGT 4 में आया हुआ है. ये भी तीनों लाइन से 4, 5 और 6 सभी क्वेश्चंस TGT 4 में आ रखे हैं. नेक्स्ट, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर. सो फॉर, अबाउट, अगेंस्ट या टू. So answer will be right here, it is D, to the troublemakers. Next one is, I am angry with him dash his carelessness. At, in, for या off. So answer will be right here, it is A. I am angry with him at his carelessness. Next one is, keep clear wigged voice. So ये भी 4 में आया हुआ है. off, from, at या after. keep clear of wigged voice. Next one is, find out the correctly spelled word. ये PGT 11 में आया हुआ है. सॉरी. कॉन्स्पिक्यूअस, कंटेजियस या कॉन्सियस या कंटिन्यूअस. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस ए, कॉन्स्पिक्यूअस. ये सही है. बाकी नेक्स्ट वन इज 109, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ये भी 11 में आया हुआ है. सो गारंटी, गारंटी सभी सेम है, बस आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है. सो ये बी हो जाएगी, ग्वेरेंटी. ओके. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सो PGT 11 का है. सो इसमें गाइस हो जाएगा आपका 1110 में हो जाएगा बी, पैसेंजर. नेक्स्ट वन इज, डायरेक्शंस हैं 11 से लेके 125. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. सो गाइस
ये क्या होता है कि उसी समय आप पैसेज को मतलब रीड करते हैं और देन उसके बाद आप अपनी समझ से आंसर्स देते हैं। सो ये 125 तक नहीं है, इवन 120 तक है। ओके, 120 तक पैराग्राफ आपका रहेगा यहाँ तक। देन इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके 122 चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन बोल्ड अस एज यूज्ड इन द पैसेज। सो हमें क्या देखना है, सेम देखना है ना, यानी कि सिनोनिम। सो सबलिमिटी, सबलिमिटी का क्या होगा, डिप्रेशन, रिडक्शन, सबवर्जन या अपहीवल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस जी, अपहीवल। ओके, सबलिमिटी का होगा अपहीवल। नेक्स्ट वन इज एनलाइटमेंट। सो लाइटनेस, इनसाइट, यू लाइट या ब्लाइंडिंग। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, इनसाइट। 122 डेडिकेटेड। सो डिवोटेड, abstained, offend या offered। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, डिवोटेड। ठीक है, डेडिकेट का मतलब होता है डिवोट। सो नेक्स्ट वन है 123 to 125 चूज द वर्ड which is most opposite in meaning as the word given in bold as used in the passage। so आपको इसमें एंटोनिम देखना है। नेक्स्ट, सो लेट्स सी पेकुलियर। पेकुलियर का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल, ऑर्डिनरी या डिस्टिंक्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, ऑर्डिनरी। फ्रेग्रेंस, अरोमा, परफ्यूम, स्मेल या स्टिंक। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज जी, स्टिंक। इटर्नल, मोमेंट्री, कंटिन्यूअल, एवरलास्टिंग या एंडलेस। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज मोमेंट्री। इसमें आपको क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन।